ભાજપ સંકલ્પ પત્ર જાહેર કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। સંકલ્પ પત્ર રજૂ કરવાના આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબ, ગુજરાતના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, અહીં ઉપસ્થિત સર્વે આગેવાનો, પત્રકાર મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ મીડિયાના સૌ ભાઈ અને બહેનો, આજે બંધારણ દિવસ છે। બંધારણ લોકતંત્રનો આત્મા છે, સાથે સાથે ભારતની એકતા અને વિકાસનો મૂળ આધાર છે। બંધારણ દિવસ પર ભારતીય બંધારણના શિલ્પી ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને હું નમન કરું છું। ભારતના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે બંધારણે બતાવેલ માર્ગે ચાલી દેશના દરેક વર્ગના કલ્યાણ માટે પ્રતિબદ્ધતા બતાવી છે અને પરિણામ પણ મેળવ્યા છે। આજના બંધારણના દિવસે ગુજરાતના સંકલ્પ પત્ર રજૂ કરતા હું આનંદની લાગણી પણ અનુભવું છું। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક એવી પાર્ટી છે કે જે લોકોની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે કટિબદ્ધ છે। એમના આજ દિન સુધીના સંકલ્પ પત્રો, એ સંકલ્પ પત્રમાં આપેલા વચનો એ લગભગ બધા જ પૂર્ણ કર્યા છે। મેં 2007 થી બધા જ સંકલ્પ પત્રનો અભ્યાસ કર્યો તો બધા જ વચનો પૂર્ણ કર્યા છે અને કેટલાક પાઇપલાઇનમાં છે અને એ રીતે વચનો આપવા, સંકલ્પબદ્ધ થવું અને સંકલ્પો પૂર્ણ કરવા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની, એના આગેવાનોની એક ખાસિયત પણ રહી છે। આજે જ્યારે આ સંકલ્પ પત્ર બનાવતા પહેલા 5 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર ખાસ અભિયાન એક અમલી કર્યો હતો। એમાં 12,000 સૂચન પેટી રાજ્યભરમાં મૂકી હતી। મિસ કોલ થકી સૂચનો મેળવાયા, એના માટે ખાસ નંબર આપવામાં આવ્યો હતો। agressorgujarat.com વેબસાઇટનું માધ્યમ પણ આપ્યું હતું। વોટ્સએપ નંબર પણ જનતા સમક્ષ મૂક્યો હતો। કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીઓ જુદા જુદા જિલ્લામાં સૂચનો મેળવવા માટે ખાસ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। યુવા મોરચા દ્વારા કોલેજ, વિશ્વવિદ્યાલય આ માટેના અલગ અલગ કાર્યક્રમો દ્વારા યુવાનોનું પણ એવા સૂચનો અને એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આમાં લાવવામાં આવ્યું હતું। રાજ્યભરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલયો, જાહેર સ્થાનો પર ખાસ સૂચન પેટી મૂકવામાં આવી હતી। ભાજપના જુદા જુદા સેલે પોતાના સંગઠનોમાં મિટિંગો ગોઠવીને સંકલ્પ પત્ર 2022 માટે સૂચનો મેળવ્યા હતા। અગ્રેસર ગુજરાત સંકલ્પ પત્ર 2022 એ ગુજરાતના તમામ વર્ગોના અમૂલ્ય સૂચનોનો દસ્તાવેજ છે। અગ્રેસર ગુજરાત અભિયાન થકી મેળવેલ સૂચનો એ લાખોની સંખ્યામાં જાય છે। એનો અર્થ એ થાય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ગુજરાતના 100 મતદાતા ભાઈ બહેનોને વિશ્વાસ છે અને એટલા જ માટે આ સંકલ્પ પત્રમાં એમણે પોતાના સૂચનો પણ આપ્યા છે અને એના દ્વારા ગુજરાતના વિકાસમાં આગળ વધવા માટેની એમણે એક દિશા પણ આપી છે। સંકલ્પ પત્ર 2022 સમિતિ સમાજ જીવનના સૂચનો એકત્ર કરી તૈયાર કરાયેલ સંકલ્પ પત્ર 2022 ભાજપ આપની સમક્ષ લઈને આવી છે। માનનીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સાહેબ, ગુજરાતની જનતા પ્રત્યેની અમારી જવાબદારી, પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરતો સંકલ્પ પત્ર 2022 આપ સૌની સમક્ષ રજૂ કરશે। ગુજરાતના 100 ભાઈ બહેનો ગુજરાતની શાંતિ, સમૃદ્ધિ, ભવ્યતા, દિવ્યતા અને વિકાસની ગતિને વધારે ગતિમાન કરવા કમળના નિશાનને પુનઃ સમર્થન આપશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છું। આપ સૌના સાથ અને સહકારની અપેક્ષા સાથે હું આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબને વિનંતી કરું છું કે સંકલ્પ પત્ર એનું વિમોચન કરે। ધન્યવાદ। જય 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 ગુજરાત, ભારત માતા કી જય। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીની સંબોધન પછી આપણે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને વિનંતી કરું स्पीकर नहीं होगा।
भारत माता की भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश द्वारा आयोजित गुजरात संकल्प पत्र 2022 लॉन्चिंग प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित काश्मीर થી કન્યાકુમારી અને કચ્છથી કટક સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વ્યાપ ધરાવનાર વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટીના યશસ્વી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને નવસારીના સાંસદ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, સંગઠનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, આપ સૌને નમસ્કાર. આપ સૌને સંવિધાન દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. 24 નવેમ્બર 1944 રોજ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજી દ્વારા બંધારણ સભા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું અને તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા અંગીકૃત કરવામાં સંવિધાન આપ્યું. આજે ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનો સમક્ષ અંકલેશ્વર ગુજરાત સંકલ્પ પત્ર 2022 માનનીય જેપી નડ્ડાજી, સી.આર. પાટીલજી અને સંકલ્પ પત્ર સમિતિના સૌ સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં પ્રજા સમક્ષ રજૂ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતની જનતાએ ભાજપને અપ્રજમ સ્નેહ, સહકાર અને સમર્થન આપ્યા છે અને 2 દાયકાથી સતત આપતી રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આ સંકલ્પ પત્ર એ બીજા લોકોની જેમ માત્ર ચૂંટણીલક્ષી વચનો આપવાનું ઘોષણાપત્ર નથી. આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતની સુદીર્ઘ, સુઆયોજિત વૈશ્વિક વિકાસ યાત્રાનો દસ્તાવેજ છે. આપણે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં પાછલા 2 દાયકાથી જનસેવાને જ સાધના બનાવી ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે વિકાસ કર્યો છે. હવે એ વિકાસ યાત્રાને વધુ વેગવાન બનાવી છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ જે સેચ્યુરેશનનો 100% લાભાર્થી સુધી પહોંચવાનો જે વિચાર આપ્યો છે એને આવનાર દિવસોમાં ચરિતાર્થ કરવાનો રોડમેપ આ મેનિફેસ્ટોમાં છે. આઝાદીના 75 વર્ષ નિમિત્તે અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરી અને આપણે અમૃત કાળમાં પ્રવેશ્યા. આવનાર 25 વર્ષ પછી દેશ જ્યારે આઝાદીના શતાબ્દી મનાવતો છે ત્યારે ગુજરાત વિકાસમાં ક્યાં હશે એનો વિચાર કરીને વિકાસમાં દેશના રોલ મોડેલ બનેલું ગુજરાત આ અમૃતકાળમાં દુનિયાનું પણ રોલ મોડેલ બને તેવા નક્કર અને પરિણામલક્ષી આયોજન સાથે ભાજપા જનતા સમક્ષ આ મેનિફેસ્ટો લાવી છે. જે કહેવું તે કરવું અને જે કરી શકે તેટલું જ કહેવું એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભરોસાની સરકારની કાર્યપદ્ધતિ છે. એટલા માટે આ મેનિફેસ્ટોમાં જે કહ્યું છે તે જનતાના સહયોગથી અમે પાર પાડીશું તેવી જનતાને પણ ખાતરી આપી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે પંડિત દીનદયાળ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને અટલજી જેવા दिग्गज वरिष्ठ वडीलों प्रेरणा से पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को ये साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये सद्भावना है। नरेंद्र भाई आपकी विकास की राजनीति અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસનો કાર્ય મંત્ર પણ છે. આપણા સૌના હિતચિંતક આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી, પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી આર પાટીલજી और મેનિફેસ્ટો તૈયાર કરવામાં સતત માર્ગદર્શન મળ્યું છે. આપણે સૌ ગૌરવ લઈ શકીએ કે ગુજરાત આજે સમગ્ર દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. રાજ્યમાં એવું કોઈ ક્ષેત્ર નથી જ્યાં ભાજપની સરકારે સેવા અને સુવિધા ન પહોંચાડી. ગુજરાત આજે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પરિશ્રમ અને માર્ગદર્શનને પરિણામે આજે ગુજરાત
ગવર્નન્સ અને ડેવલપમેન્ટના તમામ માપદંડોમાં રાષ્ટ્રમાં અગ્રેસર છે. સમગ્ર દેશમાં રોજગારી આપવામાં ગુજરાત નંબર 1 છે, તો ગુજરાત સમગ્ર સ્ટાર્ટઅપ અત્યાર સુધી પ્રથમ નંબરે રહ્યું છે. સમગ્ર દેશમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનમાં ગુજરાત નંબર 1, તો સમગ્ર દેશની કુલ નિકાસમાં ગુજરાત નંબર 1. ગુજરાત ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સમાં સમગ્ર દેશમાં નંબર 1, લીડ લોજિસ્ટિક ઇસ્ટ એક્રોસ ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સમાં ગુજરાત નંબર 1. ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ એનર્જી ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાત નંબર 1, તો કોમ્પોઝિટ મેનેજમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાત નંબર 1. સમગ્ર દેશમાં વ્યક્તિ દીઠ વીજ વપરાશમાં ગુજરાત નંબર 1, ફૂડ સેફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં પણ ગુજરાત નંબર 1. અગ્રેસર ગુજરાત સંકલ્પ પત્ર એ ગુજરાતને વધુ ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાની ભાજપાની કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરે છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વ હેઠળની ભાજપ સરકાર ગુજરાતીઓને પ્રત્યેક આશા અને આકાંક્ષાઓ પૂરી કરી છે. ગુજરાતમાં શાંતિ સલામતીની વાત હોય, નળથી જળ પહોંચાડવાની વાત હોય, 24 કલાક વીજળી આપવાની વાત હોય, સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ હોય, સ્ટાર્ટઅપની વાત હોય, મહિલા સશક્તિકરણની વાત હોય, જળ વ્યવસ્થાપન હોય, દલિત શોષિત વંચિતોનો ઉદ્ધાર હોય, આદિવાસી કલ્યાણની વાત હોય, ખેડૂતોના કલ્યાણની વાત હોય કે શિક્ષણ સુવિધા, દરેક ક્ષેત્રે વિકાસ કરીને ગુજરાતે પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. આજે ગુજરાતમાં બનેલી જનકલ્યાણની નીતિ સમગ્ર દેશમાં લાગુ થાય છે અને અનેક રાજ્યો તેનો અભ્યાસ કરવા આવે છે. ત્યારે હવે આ સંકલ્પ પત્ર અભ્યાસનો એક વિષય બને એ વાત નિશ્ચિત. બદલેલી સરકારના બેવડા લાભ અને ડબલ સ્પીડથી ગુજરાતનો દસે દિશાએ વિકાસ આ ભાજપ જ કરશે. ગુજરાતની જનતા જનાર્દન અમને ફરી એકવાર જનસેવાનું દાયિત્વ નિભાવવાનો અવસર આપશે એવા પાકા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગણેશ. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો. હવે હું આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબ, આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને સી આર પાટીલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સંકલ્પ પત્ર 2022 ગુજરાતની જનતાની સમક્ષ મૂકે. બીજો તાલીમના ગડગડાટ સાથે આપણે એને વધારી દઉં. આત્મનિર્ભરતા અને સશક્તિકરણનો સંકલ્પ પત્ર છે. આ શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સલામતીનો સંકલ્પ પત્ર છે. હું આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબને વિનંતી કરું કે મેનિફેસ્ટો સંકલ્પ પત્ર 2022 વિશે આપણને વિસ્તૃત જાણકારી. आज के इस संकल्प पत्र के विमोचन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल जी, जो संसद में मेरे साथी भी हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मीडिया के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस संकल्प पत्र के विमोचन पर आप सब लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। और आज 26 नवंबर है,
जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को अडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि है। और जब मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से दिशा देने वाली भूमि है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं करता। इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान किया, उनका संबंध इसी पवित्र गुजरात की धरती से था। सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राजे रजवाड़ों को जोड़ करके ये भारत एक महान देश बनाया, उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा है। और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धक्का दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में भी है, तो वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है, उनका भी संबंध गुजरात है। इसलिए ये गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का है। इसीलिए भव्य गुजरात, भविष्यशाली गुजरात, अग्रसर गुजरात ये शब्द नहीं है, इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जीत करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और सीआर पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प पत्र बना है, और भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गुजरात कैसे नंबर 1 है इसकी बात उन्होंने आपके सामने की, जो मैं गुजराती में समझ पाया। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी बात कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है।
लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर हुई। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। देखिए, मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके साथ। ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिव एंड ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी, एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके ज्ञानपुंज प्रोजेक्ट के तहत 1,609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरएक्टिव क्लासरूम को स्थापित किया है गुजरात की सरकार। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन की बात तो नई यूनिवर्सिटीज 19 नई यूनिवर्सिटीज बनी है गुजरात। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर के खुशी होगी, जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है, और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम अगर देगा तो वो गुजरात। उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है। एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है। कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है। ये सब कुछ यही हुआ है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है, ऐसे बच्चों को एक बार इंसेंटिव देने के लिए, अगर उनका एडमिशन किसी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए उसकी शिक्षा की जाए। उसी तरीके से जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको हम ये जो प्रदेश में, देश में रैडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा, जो आइडेंटिफाई करेगा, यानी चिन्हित करेगा और एलिमिनेट करेगा जो उनसे उठने वाली थ्रेट होंगे, जो चुनौतियां होंगी, उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा। और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर करके चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी सेवा, भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो। इसकी हम तैयारी हैं। उसी तरीके से जो एक कानून बनाया जाएगा, जो गुजरात में डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया है, जो रिकवर करेगा डैमेज डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया। गुजरात को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर गुजरात होने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे एफडीआई के डेस्टिनेशन में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं, और कई नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा
कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है उसकी एक उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसका नाम होगा परिक्रमा पथ। और यह परिक्रमा पथ साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से से टेलीफोन हाईवे ऊपर तक बनेगा और नीचे से लेकर के ऊपर ईस्टर्न साइड से आएगा और ये 1630 किलोमीटर का होगा। और उसी तरीके से उत्तर पश्चिम यानी कोस्टल एरिया, यहां पर 1380 किलोमीटर की पेरिफेरल 4 लेन सड़क बनेगी, 4 लेन 6 लेन सड़क बनेगी और यह परिक्रमा होगी। और उसी तरीके से सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे ग्रिड भी बनाया जाएगा, यानी कहा होगा गुजरात, भव्य गुजरात और अग्रसर गुजरात। गुजरात ओलंपिक मिशन के तहत वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा ताकि पहला ओलंपिक गेम अगर हो तो भारत में गुजरात की धरती पर हो। मित्रों, ये एक देवभूमि द्वारका कॉरिडोर भी इस्टैब्लिश किया गया है। द्वारका में वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर बने, इस बात के लिए विशेष प्रयोजन किया जाए। वहां श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनेगी। 3D गीता का बारे में हमको जानकारी 3 डायमेंशनल तरीके से मिल सके, इसका मोस्ट मॉडर्न एग्जिबिट करने का भी प्रयास वहां पर होगा। और इसके साथ साथ एक गैलरी भी बनेगी, जिस गैलरी में जो द्वारका की ग्लोरी थी, जो गौरव था द्वारका का, वह दुनिया को दिखाया जाएगा। इस तरीके से मित्रों, यह मैंने आपके सामने जनरल जो भव्य गुजरात की तस्वीर है, आर्थिक, किसान, मजदूर, हमारा भाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैंने चर्चा की। हमारा मुख्य ध्यान महिलाओं पर भी है। वह हमारे समाज का प्रमुख, समाज को आगे बढ़ाने में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा आयाम है और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर महिला को यूजी से पीजी तक देने की व्यवस्था की जाए। केजी से पीजी तक, किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक उसकी व्यवस्था की जाए। उसी तरीके से बहनों के पढ़ने के लिए 9 क्लास से 12वीं क्लास की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की जाए। और उसी तरीके से बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देने की भी तैयारी है। श्रद्धा मेहता योजना के तहत, शारदा मेहता योजना के तहत फ्री ई स्कूटर्स मेरिटोरियस बहनों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। बहाली बिक्री योजना के तहत आर्थिक सहायता 1,50,000 की दी जाएगी और उसी के साथ साथ मिशन मंगलम के तहत जो सेट नंबर 2 होगा मिशन मंगलम, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, उनके विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा जाएगा ताकि उसके बाद हमारी सीनियर सिटीजन बहनों के लिए फ्री ट्रक ट्रैवल की व्यवस्था की जाएगी और उसकी आदेश दी जाएगी। और जो हमारे अग्निवीर, अग्निपथ के जो हमारी बहनें आएंगी, उनको वन टाइम ग्रांट 50,000 रुपए का दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को कर सकें। उसी तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई हैं,
उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के लिए रखा जाएगा। बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर अंबाजी से लेकर के उमेर ग्राम तक ये बनेगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ट्राइबल, जो सारे ट्राइबल जिलों को कनेक्ट करेगा और उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा, उसकी हम तैयारी करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर के लिए 8 मेडिकल कॉलेजेस, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पैरा मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस ये खोले जाएंगे। 8 गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्राइबल बेल्टों में खोले जाएंगे ताकि ट्राइबल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसकी कोशिश होगी। 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे, जिसमें 75,000 हमारे मेरिटोरियस आदिवासी भाई पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए राशन की डिलीवरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डिलीवरी, इसके लिए मोबाइल डिलीवरी की सिस्टम को डेवलप किया जाएगा ताकि उनको राशन उनके गांव तक पहुंचाया जा सके। और इसी तरीके से 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे आदिवासी गांव में पूरा का पूरा 2023-24 तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने और पत्रकार बंधुओं के सामने ड्यू डिलिजेंस के साथ मैंने हर चीज के बारे में आपको आंकड़ों के साथ और पैसों के साथ बताया है। किसमें 2,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 10,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 2,500 करोड़ लगने हैं, किसमें 25,000 करोड़ रुपए लगने हैं। यानी ये जवानी जमा खर्च नहीं है। अर्थ को देखकर, खोज को देखकर, सामर्थ को देखकर और जरूरतमंद को देखकर उसकी गहराई को पहुंचाकर हमने ये संकल्प किया। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करते हुए आगे बढ़ रही है। और यह संकल्प पत्र हमें संकल्पित करता है कि अगले 5 साल हम इन लक्ष्यों को हासिल करके गुजरात को एक नए आयाम पर ले जाएंगे, इस बात का संकल्प लेकर चलेंगे। आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। मैंने प्रयास किया कि आप तक मैं मुख्य बिंदु पहुंचा सकूं और इसके बाद आप इन पर जब कोई प्रश्न करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खूब खूब आभार। મિત્રો તરફથી જે પ્રશ્નો હશે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા કે જેઓએ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના 5 દિવસ પહેલા ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો છે, જેમાં કહ્યું છે કે ગુજરાતને $1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવામાં આવશે। ઘોષણાપત્ર નહીં, વૈશ્વિક યાત્રાનો દસ્તાવેજ હોવાની વાત ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરી। સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ હાઇવે ગ્રીડને સાકાર કરવાનો વાયદો કર્યો છે। ભાજપે મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યો, જેમાં ગુજરાત શહેરી વિકાસ મિશન હેઠળ 25,000 કરોડનો ખર્ચ કરવાનો લક્ષ્ય છે। રાજકોટ વડોદરામાં મેટ્રો રેલ સેવા કામ શરૂ કરવાનો વાયદો પણ કર્યો છે। મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર વિસ્તરણ માટે 1,000 કરોડની ફાળવણીનું વચન ભાજપે આપ્યું છે। અસામાજિક તત્વો દ્વારા મિલકતોને નુકસાનની વસૂલાત માટે કાયદો લાવવાનું વચનો પણ આપવામાં આવ્યું છે। ધોલેરા ગિફ્ટ સિટી આઈટી હબમાં વધુ રોકાણ અને રોજગાર વધારવાનું વચન આપ્યું છે। बिल्कुल हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, जहां जहां मौका मिल रहा है वहां बढ़ते चल रहे हैं। श्री विकास भदौरिया जी जी ऐसा है, खर्च होगा तो नया आ जाएगा। हमारी विचारधारा बड़ी स्पष्ट है। हम जानते हैं कि 5 साल में कितना खर्च हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ेगी विकास जी
तो हमारे को कोई कमी नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, जितना आवश्यकता पड़ेगी हम बढ़ाएंगे। ममता की कौन सा भी चारा वो फ्री का नियमन करने की क्या था? प्राइवेट स्कूल अधिनियम बिल आया था उसके अमलीकरण अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ। आज भी जो प्राइवेट स्कूल है वो पेरेंट्स को लूट रहे हैं। ये आपको लग रहा है वो स्कूल के लिए कमेटी बनी है, फीडबैक इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इसको और तरीके से और इम्प्लीमेंट करें। रविंद्र सिंह डी न्यूज बोलिए, सुनाई देगा? बोलिए, सुनाइए। ऐसा है रविंद्र जी कि ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, सभी जगह है। जहां जहां हम सरकार में आएंगे वहां हम करेंगे। आपने देखा दिल्ली भारत की राजधानी, वहां भी एक समय किस तरीके से दंगे कराने की कोशिश हुई। तो ऐसी चीजें आपने भी सोची नहीं थी, हमने भी सोची नहीं, लेकिन हुई है धरती पर। तो एक सजग रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल के तरीके से उसको भारत में राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब मिले और वो एलिमिनेट हो, इसकी चिंता करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी। यूपी का मुद्दा पुरानी पेंशन वाला मामला, पूरा पेंशन योजना, उसमें हमारा बड़ा स्पष्ट है, जो हुआ है सो हुआ है। अभी न्यू पेंशन स्कीम चल रही है। मित्रों, लगातार मिलते रहेंगे तो अंतिम सवाल टाइम श्रम से है, और किसी का सवाल हो तो हाथ उठा दें। टाइम श्रम हिमांशु।